The last question of this paper is question number 11. This is of differential equation. The variables y and theta satisfy the differential equation. This is a differential equation. 1 plus y into 1 plus cos 2 theta into dy over dx, dy over d theta is equal to e power 3y. This is a differential equation. The variables are y and theta. Dependent variable is y and independent variable is theta. It is given that y is equal to 0 when theta is equal to pi by 4. Solve the differential equation and find the exact value of tan theta when y is equal to 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी विल सेपरेट द वेरिएबल्स. y के साथ दो वेरिएबल्स हैं y एंड थीटा. y के साथ हमने अटैच करना है y टर्म्स को और थीटा के साथ y के साथ हमने अटैच करना डी थीटा को, डी वाई को, और थीटा वाली टर्म्स के साथ डी थीटा को अटैच करेंगे. तो सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल सेपरेट द वेरिएबल्स. Differential equation is 1 plus y into 1 plus cos 2 theta dy over d theta is equal to e power 3y. Separating the variables, dy remains on the left hand side और y वाली टर्म एक ये और दूसरी हमारे पास ये है. e पावर 3y को भी हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी. तो सो इट विल बिकम 1 प्लस y ओवर e पावर 3y dy. राइट साइड पे ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है वो राइट पे मूव हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो वी कैन राइट इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस 2 थीटा and this d theta will be here. Now second step is we will integrate each side with the corresponding variable. Left hand side will be integrated each side will be integrated with respect to the corresponding variable. So integration, left side will be integrated with respect to y, right hand side will be integrated with respect to theta. So अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करने से पहले ये e पावर 3y को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं. 1 प्लस वाई इंटू ई पावर -3y. साइन चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में जाने से. लेफ्ट हैंड साइड this 1 plus cos 2 theta we can use here double angle formula. डबल एंगल फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2. सो 2 cos क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 cos स्क्वायर थीटा बिकम्स 1 प्लस cos 2 theta. So in place of 1 plus cos 2 theta we will use here 2 cos square theta. Here it becomes integration of 1 over 2 cos square theta d theta. Now left hand side is here we will use integration by parts because these are two different functions, a product of different functions of y. So we will integrate the left hand side using integration by parts and taking this is a 1 plus y as the first function. Second function is this e power -3y. We will integrate it by using integration by parts. राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं 1 over 2 secant square theta
Left hand side 1 plus y e power minus 3y 1/2 को कॉमन बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन साइन से 1/cos square theta 1/cos square theta, that is the cos square theta is reciprocal of secant square theta, so we can write 1 plus cos square theta को हम 1 cos square theta को हम secant square theta लिख सकते हैं, क्योंकि secant square theta की इंटीग्रेशन हमारे पास है वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, secant square theta की इंटीग्रेशन होगी tan theta, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Integration of the left hand side using integration by parts formula. First function is 1 plus y remains as such. Into integration of second function की integration e power minus 3y over minus 3 माइनस इंटीग्रेशन साइन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ही हम यहाँ पे लिख लेंगे e पावर माइनस 3y ओवर माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 1 प्लस वाई का विद रिस्पेक्ट टू y वो आगे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/2 और सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा 1/2 tan थीटा आ जाएगा प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Now we will arrange the expression. Left hand side will become 1 plus y over minus 3 into e पावर माइनस 3y, ये माइनस का साइन जो है ये इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1/3 जो है इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे e पावर माइनस 3y dy। अब देखें यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन के आगे सिर्फ एक फंक्शन है, दोबारा इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1/2 tan थीटा प्लस सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय पुटिंग दीज वैल्यूज y is equal to 0 and theta is equal to pi/4। पहले हमने इसको इंटीग्रेट करना है 1 प्लस वाई ओवर माइनस 3 ई पावर माइनस 3y प्लस 1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस 3y will be e पावर माइनस 3y over minus 3 is equal to 1/2 tan theta plus c। Now further simplifying we get 1 plus y over minus 3 e पावर माइनस 3y माइनस 9 माइनस 1/9, ये माइनस जो है यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा -1/9 e पावर माइनस 3y right side will be 1/2 tan theta plus c। Now putting here the values which are given, y is equal to 0 when theta is equal to pi/4, तो यहाँ ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो दोबारा इधर ही वो पुट कर देंगे c की वैल्यू y is equal to 0, तो सो यहाँ पे y को 0 पुट कर देंगे, यहाँ भी y को 0 पुट कर देंगे और थीटा को pi/4, दिस बिकम्स -1/3 e पावर 0 -1/9 e पावर 0 is equal to 1/2 tan pi/4 plus c। Further simplifying, -1/3 -1/9 is equal to 1/2 into 1
because tan pi by 4 is equal to 1 plus c. The value of c from here will be minus 1 over 3 minus 1 over 9 minus 1 over 2. So finally we get taking LCM of this is 18. 18 is the LCM. So minus 6 minus 2 minus 9, that is C. Finally we get the value of C is equal to minus 17 over 18. Now putting the value of C here. Now we will put the value of C here. तो यहाँ पे simplified form में हम यहाँ पे put कर देंगे value of C. So we get 1 plus y over minus 3 e power negative 3y minus 1 over 9 e power minus 3y is equal to 1 over 2 tan theta minus 17 over 18. This is the solution of differential equation. अब हमने फाइंड करना है solve the differential equations. Differential equation solve हो गई and find the left value of tan theta when y is equal to 1. अब हम यहाँ पे y is equal to 1 पुट कर देंगे. यहाँ पे y is equal to 1 पुट करेंगे. Y is equal to 1. We get 1 plus 1 over minus 3 e power negative 3 minus 1 over 9 e power negative 3 is equal to 1 over 2 tan theta की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है minus 17 over 18. So further simplifying we get minus 2 over 3 e power minus 3 minus 1 over 9 e power negative 3 is equal to, या हम इसको minus 17 over 18 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं. This becomes positive 17 over 18 is equal to 1 over 2 tan theta of taking LCM of the left hand side. या हम यहाँ से e power negative 3 कॉमन ले सकते हैं from these two terms. So it will become e power minus 3 minus 2 over 3 minus 1 over 9 plus 17 over 18 is equal to 1 over 2 tan theta. Further simplifying e power minus 3. अब इसको एलसीएम लेके हम सिंगल फ्रैक्शन में लिख लेंगे, दैट इज minus 6 minus 1 over 9 because LCM is 9 plus 17 over 18 is equal to 1 over 2 tan theta. So next is e power minus 3 into minus 7 over 9 plus 17 over 18 is equal to 1 over 2 tan theta. बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये 2 जो है लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2 इंटू minus 7 over 9 e power minus 3 plus 17 over 18 is equal to tan theta. So finally we get
इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स को, तो वी गेट फाइनली tan थीटा इज इक्वल टू 17/9 minus 14/9 e power -3. This is the answer in exact form. This is the value of tan theta. This is the exact value of tan theta, and this is the final answer.